Hello, students. Today we will be starting a new chapter, lesson number 17, the British rule and the First War of Independence. In this chapter, we will learn about how the Britishers came to our country as traders and ruled over us for 200 years. So let's move to our today's topic. India enjoyed a flourishing trade with Europe in the ancient times. Indian spices, silk, and cotton were taken by land to ports in the Red Sea. From these ports, the goods were loaded in ships bound for Europe. For a long time, most of this trade was untroubled. Children, in the ancient times, these European people started trade with us. India was very rich in spices, silk, and cotton. These were taken by lands to seaports in the Red Sea. फ्रॉम दैट पोर्ट्स जो गुड्स थे उनको शिप्स के ऊपर लोड किया जाता था और यूरोप भेजा जाता था। बहुत टाइम तक यूरोपियन ट्रेडर्स के साथ इंडिया का बहुत अच्छा मैच रहा और बहुत लाइटली उन्होंने ट्रेड किया। But things began to change after a Portuguese explorer called Vasco da Gama discovered a direct sea route to India from the lowest coast of Africa. After the discovery of this new sea route, Europeans began sailing to India directly for trade. Now children, what happened? धीरे धीरे चीज़ें बदल गई। ये कैसे बदली? जब एक पोर्चुगीज एक्सप्लोरर ने इंडिया के लिए एक डायरेक्ट सी रूट की खोज करी एंड द नेम ऑफ दैट एक्सप्लोरर वाज वास्को द गामा। आफ्टर दिस डिस्कवरी यूरोपियंस ने डायरेक्टली इंडिया से ट्रेड करना शुरू कर दिया और वो डायरेक्टली इंडिया में एंटर होने लगे। The Portuguese were the first to reach India. They were followed by the Dutch and the French. All these traders made huge profit from their trade with India. अब क्या हुआ? सबसे पहले पोर्चुगीज ने इंडिया में एंट्री करी ट्रेड करने के लिए। आफ्टर देम डच एंड फ्रेंच एंटर्ड इंडिया और उन्होंने ट्रेडर्स ने बहुत प्रॉफिट कमाया इंडिया के साथ ट्रेड करके, व्यापार करके। This led to stiff competition and rivalry amongst them, but the British were the final winners after ousting other European powers. अब क्या हुआ? जब डिफरेंट यूरोपियन कंट्रीज़ ने एंटर किया इंडिया में एंड दे स्टार्टेड ट्रेडिंग, तो उनके आपस में कंपटीशन होने लगा, राइवल्स होने लगे एक दूसरे को। और फाइनली एक दूसरे जो कंपटीशन था, फाइनली किसने इसको जीता? ब्रिटिशर्स वर द विनर्स और उन्होंने डच को, फ्रेंच को, पोर्चुगीज को हमारी कंट्री से बाहर कर दिया। How did the British come to rule India? Now, as we all know, Britishers came to India for trade only, but they started ruling our country.
Initially, the British came to India only for trade, but soon they realized the need to establish their rule over Indian territories so they could trade freely. They started building ports and maintained armies at their trading centers. Now, what happened? धीरे धीरे ब्रिटिशर्स ने क्या करा, अपनी कंट्रीज बनाना शुरू कर दिए, यहाँ पे अपनी आर्मीज रखना शुरू कर दिया, पोर्ट्स बनाने शुरू कर दिए, ठीक है। बिकॉज व्हाट दे हैव रियलाइज कि अगर वो हमारी कंट्री के ऊपर रूल करेंगे, हमारे पीपल के ऊपर रूल करेंगे, तो देयर ट्रेड विल बी ईजी एंड दे विल हैव मोर प्रॉफिट्स। Now, first sign of this change was the Battle of Plassey in 1757 in Bengal. Now what happened? उनके जो रूल हैं उसके अगेंस्ट जो इंडियन नवाब थे जो बंगाल में थे, 1757 में उन्होंने उनके अगेंस्ट वॉर किया, जिसको किसने जीता? ब्रिटिशर्स ने। और जो फ्रेंच हमारे इंडियंस के साथ थे उनको कंट्री से बाहर कर दिया गया। सो दिस वाज द फर्स्ट साइन दैट ब्रिटिशर्स रूल्ड आवर कंट्री। After this, the Battle of Buxar took place in 1764. The British rule was established, which expanded over the whole India in the next 200 years. What happened? इसके बाद नेक्स्ट बैटल जो थी वो बिहार के एक छोटे से राज्य में हुई थी, दैट इज कॉल्ड एज बक्सर, जिस 1764 में, और ये भी ब्रिटिशर्स ने ही जीती थी। ये वाला युद्ध भी ब्रिटिशर्स ने जीता था, और इस टाइम पर उन्होंने पूरे कंट्री के ऊपर अपना एक जो था रूल स्टैब्लिश कर लिया था। Now our country was under the Britishers. Unrest. Now kings and nawabs unhappy. The power of the kings and nawab was taken away. Many unjust laws were passed by the British, like the doctrine of lapse, according to which if a ruler died without leaving a main heir, his territory would pass on to British hands. Now, उनके राज्य में, उनके रूल में, ब्रिटिशर्स के रूल में नवाब और किंग्स भी खुश नहीं थे, क्योंकि क्या कहता है, किंग्स और नवाब्स की जो सारी पावर थी ब्रिटिशर्स टुक इन देयर हैंड्स। ब्रिटिशर्स ने क्या करा, इसके अलावा बहुत अनजस्ट लॉज पास किए थे। उनमें से एक था डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। इसके उसमें क्या था कि अगर कोई रूलर विदाउट मेल हायर, बिना बेटे के अगर उसकी डेथ हो जाती है, तो वो टेरिटरी डायरेक्टली ब्रिटिशर्स के हैंड में चली जाएगी। Farmers unhappy. Farmers were forced to grow indigo plants. The blue color obtained from this plant was used to dye cloth. They were forced to sell it only to the British, that too at a very low price. Their fields became useless. Now students, farmers were also very unhappy, क्योंकि उनको ज़बरदस्ती नील की खेती कराई जाती थी। ये जो नील था, इससे क्लोथ डाई होते थे जो ब्रिटिशर्स को चाहिए थे, और द्रेवर फोस्ट जो नील की खेती किया, जो इंडिगो होता था, ये फार्मर्स से ब्रिटिशर्स को सेल करते थे, वो भी बहुत कम दामों में। और इसके अलावा इसकी खेती के बाद उनका जो खेत था वो यूज़लेस हो जाता था, उसमें कोई और क्रॉप नहीं उग सकती थी। So the farmers were very unhappy. Other than this, some farmers were forced to grow cotton, which too was bought by the British traders at low cost. Therefore, the cotton farmers and the weavers too suffered
फ्रॉम एक्सट्रीम पॉवर्टी। इसके अलावा कुछ फार्मर्स को ज़बरदस्ती कॉटन की खेती कराई जाती थी और उसको भी ब्रिटिशर्स ही खरीदते थे, वो भी बहुत लो कॉस्ट में। इससे क्या था, कॉटन फार्मर्स और जो वीवर्स थे दे वर ऑल्सो वेरी अनहैप्पी एंड दे वर लीडिंग द पॉवर्टी लाइफ। Traders were not allowed to set up their own mills or factories. They were forced to trade only in goods acquired by the British. जो ट्रेडर्स थे उनके पास भी फैक्ट्रीज़ और मिल लगाने की कोई सुविधा नहीं थी, वो नहीं बना सकते थे, नहीं लगा सकते थे, और वो भी वही गुड्स को ख़रीदते थे जो उसी गुड्स का ट्रेड कर सकते थे उनके साथ जो ब्रिटिशर्स द्वारा बनाए गए थे। दिस इज़ हाउ आर ट्रेडर्स, आर फार्मर्स, आर किंग्स एंड आर होल कंट्री सफर्ड अंडर द ब्रिटिश रूल. For today, I'll be winding here only. Thank you.